सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी रूपिणी विद्यारम्भं विद्यारम्भं करिष्यामि इतिर्भवतु मे सदा। नमस्ते गतकक्षासु नमस्कार। नमस्कारः। कृदन्तप्रकरणस्य अभ्यासः आरब्धः अस्ति। कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः वस्तुतः अ, सर्वाण्यपि कृदन्तप्रत्ययाः सर्वेपि कृदन्तप्रत्ययाः पूर्वमेव अधीताः, किन्तु सूत्रानुगुणम् अधुना किञ्चित् किञ्चित् सूत्रानुगुणम् अध्ययनं क्रियते। तत्र प्रथमः प्रत्ययः अस्माभिः अधीतः अस्ति तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् इति प्रत्ययस्य उपयोगः कुत्र भवति? यदा एकः एव कर्ता अन्यायां क्रियार्थायाम् एकां क्रियां करोति। यथा रामः विद्यालयं गच्छति, पठति। अत्र यदि रामः किमपि कार्यं नाम क्रियां कुर्वन् अस्ति, तत्र क्रियापदस्य नाम क्रियायाः प्रयोजनं किम्? तत् प्रयोजनं निर्देशयितुं तत्र तुमुन् प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। नाम किं? रामः विद्यालयं गच्छति। गच्छति इति क्रियापदमस्ति। किमर्थं गच्छति? किं प्रयोजनमस्ति? तत् प्रयोजनं दर्शयितुं तुमुन् प्रत्ययस्य तत्र उपयोगः क्रियते। यथा रामः पठितुं विद्यालयं गच्छति, सः एकः प्रयोगः। तथा कालसमयवेलासु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तुमुन् प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। कालवाचकः नाम कालवाचकः यः कश्चन शब्दः, समयः, कालः, वेला, तेन साकं पुनः तुमुन् प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। यथा अयं पठितुं कालः, अयं भोक्तुं कालः, अयं स्वपितुं कालः। एवमेव कालः, समयः अपि समानः एव, वेला अपि समानः। पठितुं वेला, भोक्तुं वेला, पठितुं समयः, लैक् दैट्। तुमुन् प्रत्ययस्य उपयोगः अस्माभिः पठितः। तस्य कृते सूत्राणि अपि दृष्टानि, तस्य विविधानि रूपाणि अपि अभ्यस्तानि। ततः अनन्तरं त्वा प्रत्ययस्य अस्माभिः उपयोगः दृष्टः। त्वा प्रत्ययस्य पुनः उपयोगः कुत्र? यदा एकः एव कर्ता क्रियाद्वयम् अथवा अधिकाः क्रियाः करोति, तदा याः याः क्रियाः समाप्तिं गताः, समाप्ताः, तां क्रियां प्रदर्शयितुं त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। यदा क्रियापदम् उपसर्गरहितं भवति, तदा त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः भवति, अस्माभिः दृष्टम्। एकम् उदाहरणं, रामः पठित्वा गृहम् आगच्छति। Having studied, he comes back to the home, comes to home, right? So he has completed one action and now he is performing another action. Having whatever has completed, to show that action, we use twa pratyanta form. So again, regarding twa pratyaya, we have seen various shlokas again and some examples also. Now, apart from that, so similar pratyaya we are going to see tomorrow. Let me share the screen. Where is that? Okay. Hmm. Okay. Before that, we need to understand upasargas. Upasarga we have already studied in Sandhi Prakarana when we did Pancha Sandhis. There, Pradayah Kriya Yoge Upasarga Saudnyaha Syuhu, that sutra comes, and where Paniniji describes para, apa, sam, anu, ava, nisnir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ut, abhiprati, pari, upa. These are 22 upasargas. Upasarga, actually, they all are avyayas. And when they get upasarga saudhnya, when they are added to kriya pada, verb,
they will be getting the upasarga as संज्ञा. उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएंगी जब वो क्रियापद को जोड़े जाएंगे. प्रपरापसम अनु अवनिस्निर दुस्तुर्वी आंगनी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप. दिस इज हाउ इफ यू वांट टू मेमोराइज इट विल हेल्प यू. हाँ, आप सूत्र जैसा मेमोराइज करते हो वैसे भी प्रपराप समानु अवनिस्निर दुस्तुर्वी आंगनी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप ऐसा भी बोल के याद कर सकते हो. And there are some upasarga tulyas. Let me now again create all the effects and all. Okay. Upasarga tulya. There are some upasarga tulya. Upasarga, they are not directly upasarga, but they are considered as upasarga. For example, swi. If you add swi with karoti, it will be swi karoti. Right? Swi karoti. To svikar karna. Angi karoti. Angi is not directly upasarga. It is not counted into upasarga, but they are like used as upasarga. Angi karoti. Ushni karoti. Ushni karoti makes it hot or he, गरम करना. उष्णी करोति. सूर्यः उष्णी करोति. तुष्णी शांत करना. तुष्णी करोति. टू मेक इट काम. उष्णी तुष्णी करोति. अलंकरोति. अलंकार करना. टू डेकोरेट. स्वच्छी करोति. टू क्लीन. बहिष्करोति. Sakar changes into shakara because of some rule and it becomes बहिष्करोति. बहिष्कार करना. बहिष्कार करने को क्या बोलते हैं? डिस्कार्ड तो नहीं बोल सकते क्योंकि चीज नहीं. बहिष्कार इज ऑलवेज फॉर अ पर्सन, राइट? और इट कैन बी एक्शन ऑल्सो. डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं शायद. ओके. डिस्कार्ड. अंतर करोति. मेक द डिस्टेंस. अंतर करोति. पूटी करोति. फोल्ड करोति. पूटी करोति. So these are like upasarga tulya. And famous shloka is there. Upasargena dhatvarthah balat anyatra niyate. प्रहाराहार संहार विहारवत. So this is one shloka. Upasargena dhatoh artah. If we make samasta padam, it will become dhatvartah. If you split that samasta pada, vigraha vakyam if you do, it will be dhatoh artah. धातु का अर्थ, क्रियापद का अर्थ. धात्वर्थः उपसर्गेण बलात् अन्यत्र नीयते. ये वाक्य निर्मातारः भवन्ति. तैः किं क्रियते? यदा उपसर्गः ऐड क्रियते क्रियापदेन सह. क्रियापदेन सह यदा उपसर्गः ऐड क्रियते तदा तस्य क्रियापदस्य अर्थः बलात् अन्यत्र नीयते. बलात् अन्यत्र नीयते नाम the meaning of that kriyapada will be changed. Kriyapada, that is the actual meaning. Okay. Like what? For example, there is a famous example. Harati dhatu. Ru harati. To carry, to take away. So this is the example. If you add pra upasarga to that ru harati dhatu, it becomes praharati. Praharati. प्रहार करना. और प्रहार again another praharati. If you add ang upasarga, sorry, ang upasarga, ng goes because of halantyam, tasya lopah, it remains only a. It becomes aharati. Aharati means what? To take inside. Khana. Aharati. Samharati, if you add some upasarga, this one, let me use this also. Ang upasarga, this nga part will be dropped because of halantyam sutra. Some here, some here, some upasarga. Thus ma will go on the top of sa. There is another rule for that. When ma, halanta ma, at the end of the pada, when the ma is followed by any another consonant, vyanjanam,
makara changes into anuswara. So it becomes samharati. Meaning would be samhar karna, to destroy. Praharati, again praharati word we have already seen. Then viharati, vi upasarga purvak ruharati dhatu, viharati, to roam around. रोमिंग करना. परिहरति, परिहार करना. परिहार का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दूर करना, है ना. दुखम परिहरति, सब बाजू से नष्ट करना, ऐसा अर्थ हो सकता है. दूर करना, नष्ट करना, सब ओर से. परितः मतलब चारों ओर से. हरति मतलब टू टेक अवे. So this is how, if you add upasarga, there would be some changes. There are three main rules regarding the धात्वर्थम बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव विशिनष्टि यन य विशिनष्टि विशिनष्ट्यन्ने, तमेव विशिनष्टि विशिनष्. There is a typo, huh? I will make changes into that. तमेव विशिनष्टि विशिनष्टयन् यह. ओके, करेक्ट ओनली. तमेव विशिनष्टयन् यह उपसर्ग गतिस्त्रिधा. I will again check this part whether it is shatru pratyaya or is there any particular sandhi. I will check and I will let you know in next class. तमेव विशिनष्टयन् उपसर्ग गतिस्त्रिधा, यह उपसर्ग गतिः त्रिधा, सह उपसर्ग गतिस्त्रिधा एवमपि वक्तुं शक्यते. So actually what उपसर्ग does, three works he does. उपसर्गात् कदाचित् क्रियायाः अर्थपोषणं भवति, अर्थं पोषयति अथवा अर्थस्य अर्थे विशेषताम् आनयति. शोभते means to look good. It means shobhate, rajate, it shines, it looks good. When you add su along with that, even that kriya pada is going to get, arthapushanam bhavati. It will look even better. हम जब बोलते हैं स्वागतम, उसमें फिर से हम हिंदी में या मराठी में सुस्वागतम बोलते हैं. एक्चुअली सुस्वागतम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी आगतम शब्द के साथ उन्होंने ऑलरेडी सु शब्द जोड़ा है. So it becomes swagatam. Again, we don't need to add suswagatam. But if you add, what will happen? That su will add some more meaning to that. Oh, बहुत बहुत स्वागत, ऐसा अर्थ होगा उसका. Okay. हाँ. So one thing, it will create some more arthaposhanam. It will do. It will nourish the artham. नेक्स्ट, कदाचित क्रियायाः अर्थस्य परिवर्तनं करोति उपसर्गः अथवा भवति. उपसर्गेण क्रियायाः अर्थस्य परिवर्तनं भवति. यथा नयति इज अ क्रियापद. इफ यू add a उपसर्ग, it will change the meaning. It will become anayati, to bring. Nayati, to carry. Anayati means to bring. Similarly, gacchati means to go. If you add a upasarga, it will become agacchati, meaning will change. Next, kutrachit. Now this is rare again. Somewhere only you will find kutrachit parasmaipada kriyapadam atmanepade. तथा आत्मनेपदस्य क्रियापदम आत्मनेपद यत् क्रियापदम वर्तते तत् परस्मैपदेषु परिवर्तनं तस्य भवति. तत् परिवर्तते. In the sense, jayati belongs to parasmaipada. When you add vi upasarga along with jayati kriyapada, it doesn't remain into parasmaipada. It changes in atmanepada. So vijayate, when you you see the kriyapada along with vi upasarga, you are not going to find vijayati. Vijayati not correct prayogam. Even though jayati dhatu belongs to parasmaipada. It changes into vijayate. Similarly, ramate belongs to atmanepada only. But if you add particularly vi upasarga along with that, it becomes viramati, not viramate.
there are some, exceptions, or there are some rules by which you can change Parasmaipada into Atmanepada and Atmanepada into Parasmaipada because of Upasarga. So these three things I wanted to introduce today. And based on that, again, we are going to practice Lep Pratyay. Anything else do you want to ask? So I have a question, sir. This like Parasmay becomes Atmane and Atmane becomes Parasmay. Do we have to at some point memorize these, or how do we know which will become? Yeah, there are some Kriya Pada they have given by Paniniji. Sometimes all the Kriya Padas we will take up separately. One class can take, there are some sutras. So one, two classes we can take up on how Parasmay Pada changes into Atmanipada and Atmanipada changes into Parasmay Pada. Okay. Okay, thank you. Then same rule I am saying that if you add Upasarga along with Kriya Pada, the artha meaning will be totally different. Like karoti means to do. Apakaroti, apakar karna. Samskaroti, samskar karna. Anukaroti, anukaran karna. Adhikaroti, adhikar karna. Similarly, pratikaroti, swikaroti, ushni karoti, tushni karoti, bahish karoti, alang karoti, स्वच्छि karoti, अंगी karoti. अंगी karoti डबल नहीं ना आया? नहीं, अंगी karoti. And puti karoti. So this is how. Again, there are bhu bhavati dhatu. If you add anu upasarga anu along with anu bhavati, it will become anubhav karna anubhavati. What is puti karoti? Hold it. Vastram puti karomi. Sa vastram puti karoti. She folds the cloth. Vastram. प्रभवती. प्रभवती उत्पन्न होना, समर्थ होना, सह ज्ञातुम प्रभवती, सह कृदंत प्रकरणम ज्ञातुम प्रभवती. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द कृदंत प्रकरण. अथवा उत्पन्न भवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, उत्पन्न होना. पराभवती, कृष्ण शत्रुं पराभवती. परिभवती, परिभवती तिरस्कृत करना. अभिभवती, अभिभवती ये शब्द गीता में आता है ना, 13th 14th चैप्टर में. सत्वः रजसी तामसी च अभिभवती. सत्वं व्हाट इज दैट श्लोक? अभिभवती भारत. सम या विल फाइंड दैट. अभिभवती मतलब एक गुण ऊपर जाता है, बाकी के दो नीचे आते हैं. तो दैट ऊपर जाना मीन्स अभिभवती. उसके ऊपर जाना, अधिकार करना उन दोनों के ऊपर. सो समटाइम्स सत्व बिकम्स अभिभव, मीन्स सत्व गेट्स बढ़ जाए. कभी कभी सत्व बढ़ जाता है, कभी कभी रजस बढ़ जाता है, कभी कभी तमस बढ़ जाता है. सो व्हेन सत्व इज हाई, that time we can say सत्वः सत्वगुणः अभिभवती. अभिभवती वो बाकी दोनों को दबाता है, इट्स सरप्रेस. संभवती उद्भवती, समुपसर्ग उद उपसर्ग पूर्वक यदि भवती क्रियापदमस्ति चेत् पैदा होना, ऐसा अर्थ. आविर्भवती, आ उपसर्ग प्लस वी उपसर्ग. तो वंस वी कैन ऐड one upasarga, once we can add even 2, 3 or even 4. So see, already bhu kriya pada will have 90 forms. 90 forms in the sense, parasmay pada, if you take a present tense, it will have 9 forms. So similarly, there would be 10 lakaras. 10 into 9, it is going to be 90 forms. And if you add one upasarga along with that, again there would be 90 forms. If you use 22 upasarga along with bhu, see 90 into 22. I don't know, गणित में मैं बहुत कच्चा हूँ, तो I am not able to find the number. तो basically बहुत मतलब 22 उपसर्ग यदि ऐड करते हैं क्रियापद के साथ, तो 90 फॉर्म्स इनटू 22, वो बहुत बड़ा नंबर, शायद हजारों में चला जाएगा. एंड प्लस इफ वंस वी यूज ओनली वन उपसर्ग देन 20.
अभी कभी कभी हम दो उपसर्ग एक साथ यूज भी कर सकते हैं, कभी कभी तीन उपसर्ग एक साथ यूज कर सकते हैं, कभी कभी चार। तो सी द नंबर ओनली, तो भू धातु का ही नंबर इतना बड़ा होता है। तो आई एम नॉट अगेन, दिस इज नॉट रिगार्डिंग ओनली क्रियापद। तो ये क्रियापद, क्रियापद के साथ तो उपसर्ग यूज होते ही होते हैं, कभी कभी इनके साथ तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय ऐसे बनाते हैं, जैसे कि अनुभूव। तो ऐसे अनुभूय के साथ और कितने तो फॉर्म बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ द पाणिनि जी क्रिएट्स, नॉट पाणिनि जी, वैयाकरणिकाः, वैयाकरणाः, दे फॉर्म वेरियस वर्ड्स। सिमिलरली गम धातु इज देयर, गम धातु मीन्स टू गो, गच्छति। ओके, this belongs to this only. Okay, gama. When you add a upasarga, agacchati means to come back, abhyagacchati, abhi plus a plus gacchati, abhyagacchati, ana. Atitihi abhyagacchati. Sometimes we called the guest as abhyagata atithi. Abhyagat मतलब जो आया हुआ है, अभ्यागते, अद्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य अभ्यागतः अतिथिः वर्तते, माननीय डैश डैश डैश, तथा वाक्यम उच्यते। अभ्यागतः नाम वन इज इनवाइटेड एंड ही इज उपस्थित नाउन, आया हुआ। अभ्यागत। प्रत्यागच्छति, प्रति प्लस आ प्लस गच्छति, प्रत्यागच्छति लौट जाना, अनुगच्छति पीछे जाना, अवगच्छति टू अंडरस्टैंड, अधिगच्छति प्राप्त करना, अभ्युद्गच्छति स्वीकार करना, निर्गच्छति निकलना, संगच्छते, इट माइट बी संगच्छते, हाँ संगच्छते, संगच्छध्वम संवदध्वम ना, आत्मनेपदी इट शुड बी नॉट गच्छति, संगच्छते, सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु चेंजेस इनटू संगच्छते। उद्गच्छति, या उपरि गच्छति इति अर्थः तस्य, उड़ना। अपगच्छति नष्ट होना, उपगच्छति पास जाना, परागच्छति लौटना, प्रत्युद्गच्छति स्वागतार्थ आगे जाना, समधिगच्छति पास जाना। चरचरति टू वॉन्डर, आचरति आचरण करना, अनुचरति पीछे पीछे जाना, समचरति घूमना, विचरति विचरण करना, उच्चरति उच्चारण करना, उल्लंघन करना। उच्चरति का अर्थ उल्लंघन करना भी होता है। उपचरति उपचार करना, प्रचरति प्रचार करना। सी द चर धातु चेंजेस इनटू gets all the meaning along with upasarga. Similarly, sad dhatu is there, shabvrut is the dhatu, it means sidati, to sit down, prasidati प्रसन्न होना, विषिदति दुखित होना, आसीदति पहुंचना, प्रत्यासीदति अथवा उपसीदति पास जाना, निषेधति बैठना। दिस इज हाउ उपनिषद शब्द इज फॉर्म्ड, बैठना, उपनिषदि, उपनिषति, उपनिषदि। ओके, उपनिषद। अवसीदति अथवा उत्सीदति मीन्स नष्ट होना। ओके, सो दिस वर सम धातुस। Similarly, vartate आत्मनेपदी धातु, so it means to be, to become। प्रवर्तते लगना चलना, अनुवर्तते पीछे पीछे, पीछे पीछे चलना, निवर्तते लौट कर आना, वगैरह वगैरह। ईक्षते धातु टू सी, इफ यू एड प्र उपसर्ग इट एड सम मोर मीनिंग, प्रेक्षते अच्छी तरीके से देखना, अपेक्षते अपेक्षा करना, अवेक्षते देखना सोचना, रक्षा करना, उपेक्षते उपेक्षा करना, निरीक्षते निरीक्षण करना, टाइपोज है वहां, नकार मूर्धन्य नकार होना चाहिए। परीक्षते करना, परीक्षते का अर्थ परीक्षते परीक्षा करना, प्रतीक्षते का अर्थ, ये सब मैंने कलर में जो जो हिंदी था अलग अलग किए था सब, लेकिन अभी क्या करें, कल ही मैंने फिर से और कलेक्ट किया मैंने वो सारा डाटा, और या दिस इज हाउ व्हाट टू डू नाउ। Based on this upasarga idea, we are going to learn lep pratyanta forms. So basically, already whatever these rules we had already seen in some classes, there are no difference between twa pratyaya and lep pratyaya. Meaning is same. But where do we use twa pratyaya? When there is no upasarga along with kriya pada, that time we use twa pratyaya. And when we upasarga, when kriya pada is preceded by upasarga, that time we need to use only twa, not twa, only lep, not twa pratyaya. So lep pratyaya has the same function as twa pratyaya, but the only difference is that in lep pratyaya is suffixed when the verbal form has an upasarga prefixed to it. For example, when the lep pratyaya is added to nya dhatu, nya changes into janati, isn't it? When you use upasarga, vi upasarga,
to make having done something, it becomes vidnyaya. V plus jna plus lya pratyay. Here jnatva. If we only use jna dhatu, then we can say jnatva, having known. And when we use some upasarga before that, then we need to use lyap pratyaya. Into that lyap pratyaya, pa will be removed, la will be removed. Pa drops by saying halantyam. So that will get it savnya and that will be dropped. La also gets, la also disappears because of lashakva tadhite. प्रत्ययाद्याः ल श क वर्गाः यदि प्रत्ययस्य आदौ यदि ल भवति ल्यप् प्रत्यय वर्तते प्रत्ययस्य आदि वर्णः लकारः अस्ति इति कृत्वा लकारस्य इत् संज्ञा भवति लकारस्य इत् संज्ञा भवति बाय व्हाट लशक्व तद्धिते देयर इज अ सूत्र and tasya lopah whatever is its संज्ञक letter that letter will disappear so only ya will remain. So V plus Nya plus Ya, it becomes Vidnyaya. This is how the forms are made. Let api prathamayaः क्रियायाः समाप्तिं प्रदर्शयति द्वितीयायाः क्रियायाः आरम्भं च सूचयति. Similar function like tva and lep is same. यदा क्रियायाः पूर्वम् उपसर्गः भवति चेत् तत्र लेप् प्रत्ययः भवति. उदाहरणार्थं कैलासः विद्यालयम् आगम्य पाठम संस्मृत्य च गृहं गच्छति. So विद्यालयम आगम्य having come to the what university or विद्यालय पाठम संस्मृत्य remembering the path गृहं गच्छति he goes to home. So like if the same sentence if we have to put in tva pratyay kailasah vidyalayam gatva, right? Gatva. So meaning will be here and there because of upasarga it changes meaning. Gatva means having gone. Agamya means having come. तो थोड़ा यहाँ वहां जाएगा लेकिन if you want only त्वा प्रत्यय then you can say विद्यालयं गत्वा पाठं स्मृत्वा गृहं गच्छति. There would be little difference. अहं पुष्पाणि आनीय देवान् पूजयामि. जी एक प्रश्न है मेरा सर ये जो एक ही सेंटेंस में कैन वी यूज त्वा एंड ल्यप yes at the same time? yes Okay, thank you. Because they are indicating different action na. Karta can many actions and to show that we can say Ramah Vidyalayam Gatva Patham Vidnyaya Shlokam Samsmritya Gruham Agachati. Can say. Thank you. Okay. Next. Mata Gruham Vilokya Avalokya Va प्रविशति मतलब माता अच्छी से घर में इंटर करने के पहले देखती है कुछ नहीं है सेफ है वगैरह वगैरह. Then she enters, isn't it? That story again Panchatantra I am remembering that mongoose wali story. Okay, she doesn't avalokanam she doesn't do and because of that reason she thinks oh that mongoose has killed my child and whatever pot she was carrying she just dropped on his head and that mongoose was murdered or killed by her. Then she only blames her husband. That story is interesting. Sometime I will let you know. I will show that story. Okay. सीता वस्त्राणि प्रक्षाल्य आसने उपविश्य च श्लोकान् स्मरति. The meaning is simple. Sita having washed the clothes having sat on the asanam, Sita remembers or memorizes. Again, I was working on this. Okay, you make sentences. I will work on this again. One by one, you can. You can pick up any kriya pada. Tva pratyanta form or let pratyanta form, whatever you want to make, you can do that. सा लेखनी आनीय लिखति.
और सा लेखनी आनीय पत्रम आलिख्य प्रेषयति. No, samichinam. There was only little mirror, not mirror, error. The error was whenever you use tva pratyanta form or lep pratyanta form. Along with that, you need to use karma padam. You have used karma padam, but you haven't shown through vibhakti. Can you change that sentence and again make by using dvitiya vibhakti with some pada? In the sense, same sentence, just add dvitiya. Dvitiya for what? You said lekhani. It is going to ओ be लेखनी, करेक्ट, सॉरी सॉरी. सा लेख, आई एम सॉरी, लेखनी को लेकर के, हाँ करेक्ट. सा लेखनीम आनीय पत्रम आलिख्य प्रेषयति. samichinam. Done. And then, Sorry, yeah. so along with tva pratyaya and lep pratyaya, if you are adding particularly karma padam, that karma padam will be in dvitiya only. Aham varg, like vargam agamya patham pathatya Patitva. patitva. You are not adding upasarga will along with patha dhatu, so tva pratyaya you can use patham patitva, Patitva. pathya, whatever. Then Purna Kriya Pada you need to use. I didn't get it. What? Tva pratyaya and lep pratyaya, they both are apurna kriya. So after that you need purna kriya, like patham sampathya. After having studied path, what? Next kriya, purna kriya pada you need. Aham vargam agamya sanskritam pathya Sampathya. pathya vyakaranam avagamya. Avagamya. Then what do you do? Purna kriya you need to use. Sampurna kriya pada. Gruham gacchami. गृहम गच्छामि. गच्छामि, पठामि वगैरह ऐसा पूर्ण क्रियापद आपको यूज करना होगा. ओके ओके पूर्ण क्रिया. ओके. So pathya, directly you cannot use pathya because lep pratyanta form will be used when you add some upasarga, in the sense कुछ उपसर्ग यदि आप यूज कर रहे हो तब जाकर के वह लेबंत फॉर्म आएगा. Few more sentences. We have 3-4 minutes, right? How can we make Arjun ने श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकारा? स्वीकृत्य. हाँ स्वीकृत्य. हाँ श्री कृष्ण का शिष्यत्वं स्वीकृत्य अर्जुनः किं करोति? युद्धं कृत्वा. अर्जुनः युद्धं कृतवान्, युद्धं करोति. We can say that. स्वीकार करना में स्वी की मात्रा रस्व होती है क्या हिंदी में? नहीं ना, ठीक है ना? दीर्घ रहेगा सर. I mean, I don't know about Sanskrit, but Hindi is definitely दीर्घ. I know हिंदी, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है. अच्छा, I cannot make a changes. हाँ, yeah, I can. Okay, you make another sentence. अहम गुरुं प्रणम्य व्याकरणं संपठ्य विहारं करोमि. Viharami. Viharami. That's so. Viharami is a little polished way of saying To walk. करना मतलब विहार. Yeah, right. एंजॉय के साथ जब हम वॉकिंग करते हैं, लॉट ऑफ जॉय व्हेन वी वॉक, दैट इज कॉल्ड विहार करना. So viharam karomi versus विहरामि.
Viharami. So Viharami is a more polished way of saying it, or Viharam Karumi is incorrect? Not incorrect. There are, Vibhajya Prayoga I have introduced. Mm-hmm. Prayoga and direct Kriya Pada. Mm-hmm. It becomes little bit difficult to remember all the forms. That time they use the method of विभज्य प्रयोग. आपको करोति क्रियापद याद है तो सब जगहों पे विहरणम करोमि, भजनम करोमि, खादनम करोमि, पानम करोमि वगैरह वगैरह ऐसे यूज करते हैं. Yeah, so both are correct only. In basic stage, in Sanskrit Bharati, whenever they want to teach Sanskrit, spoken Sanskrit, they find this kind of methods. So nice. Yeah. Can we say Dhritarashtra or like Sanjay say, like I want to use the Sansrutya. Samsrutya. Samsmritya, Samsmritya. Do you remember that? तो धृतराष्ट्र ने संजय से सुनकर कुरुक्षेत्र का वो दृश्य देखा, तो हाउ कैन वी से धृतराष्ट्रः संजयात् महाभारतं युद्धविषयं संश्रुत्य दुःखम् अनुभवति अथवा आनन्दम् अनुभवति. वी कैन ऐड एनीथिंग. जी जी ओके. स्तुति करके I had sutras for twa pratyaya, but I couldn't now today. Next time I will probably gather all the sutras from different places, and I will put here in one slide. Sure. For even lep pratyanta forms also. So this you practice today, make sentences, then this sambhashana, this is simple one. How many minutes we have? One. Okay, let's stop here. Okay. We'll do Purnamadaha.